Hi. Hi, here I am giving my camera for the service, and today we celebrate Sony Day in our college, and we all are very excited for the event. And I'm very excited here because two cameras will be launched here in our college itself. There are quite few, right? बहुत सारे users हमारे पास सोनी के. And before we start, I would love to give you one more information. We are going to reveal this new camera. So you will count on 1, 2, 3 and we will, okay? So you guys have to count if you want to. Guys, count down. 3, 2, 1. Hi sir, how are you? Good. Today we are at DCOP auditorium और मैं आपको कुछ नहीं दिखाने वाला आज. Right now I'm just here to test this new wireless mic from Sony. ये जो आप देख रहे हैं, this is a new mic collection. We have this mic. This is also very cute one, very small one. So this is a new mic. So मैं सिर्फ आवाज़ चेक कर रहा हूँ. Mic check. आवाज़ कैसी आएगी इस कैमरे में, इस mic में basically. So sir, we are celebrating Sony Days. Yes, we are celebrating Sony Day here, which is very, very interesting. Cameras are being serviced right now. Sony Day Carnival. It's not for one day, it's for 2 days. जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे lenses हैं, बहुत सारा cameras हैं, and we just launched our new camera also. So it's the starting of our celebration of 10 years. Yes, indeed. So this year, this summer's like in August, we'll be completing our 10 years of DCOP, and it's going quite good. I hope माइक की आवाज़ भी अच्छी रिकॉर्ड हुई होगी.
हाय हेलो सो क्या हो रहा है आज? आज ये सबके सोनी कैमरास की फ्री सर्विसेज अवेलेबल कराई जा रही है इनको, जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम खुद से वो सर्विसेज अवेल नहीं करा सकते। So which gear you are using? A1 oh flagship camera. यस। So now there is a Oscar winning movies. How many of you have watched it? Anyone who has watched it? Okay. So do you want us to play it? It's a 40-minute movie which got the Oscar and it was shot on all Sony cameras. And this is not for the first time we want to do it. We want to do it more often, so that anytime there is something new happening with the Sony, you get the privilege of, you know, the first people who deserve to know these cameras, to have hands-on, is you. Earlier this was not possible because, you know, the market was like we should give it to some top-notch photographer or something. But my job at Sony is that I bring more power to the students. You know, experimental artist who does a lot of experimenting with photography. His name is Shreyansh and he's with us. Da-na-na-na-na. Because we are about to start the new session. Hello everyone, this is Shreyansh. I'm a fashion and portrait photographer. Today I'm at this amazing studio space, Delhi College of Photography. And यहाँ पर आने के बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा है. They have all the equipments possible. Today Sony has gotten me here for a small workshop, and it is such an interesting environment, such amazing students. It was lovely giving them a small session of workshop and showing my work to them. I'm really looking forward to see these guys doing really wonders and all these kids doing amazing work. Photo or video? Baba, you have to do both. You have to do both. There is no this की only confusion. वो confusion मत रखो. दोनों करना है आपको. अगर आपको वीडियो में अच्छा होना है तो फोटो करना पड़ेगा. आपको फोटो में अच्छा होना है तो वीडियो करना पड़ेगा. They both come together and there is no doubt that you can only pick up one thing and you'll be like हाँ नहीं ये अच्छा कर लिया होगा. वो नहीं हो पाएगा. You want to do good videography, be amazing photographer, you'll be brilliant videographer. You want to do brilliant photography, also shoot video, you'll be insane photographer. They both come together. You have, that's the reason why these cameras, they have video and photo both together.
या शॉर्ट फिल्म रहे ना, तो कैमरे के पास अगर आपकी गिम्बल है तो कैमरे को नीचे ज़मीन पे छोड़ देते और वो शॉट ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन क्या आपके पास इसी कैमरे से गिम्बल का शॉट आ सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, इसी कैमरे से विदाउट गिम्बल। ही क्यों लिया? क्योंकि आप उसे अकेले ऑपरेट कर सकते हैं। ऑटो फोकस, नो मैन पावर, नो फोकस पुलर, किसी भी पर्सन की आपको जरूरत नहीं है। अगर तो बड़ा सेटअप लगाएंगे तब जरूरत है। अगर मान लो बाहर जा रहे हैं, आज मेरे पास की दुबई का गाना आ गया, तो कहाँ पे 4 बंदे तो नहीं मेरे साथ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, मतलब आके डीकॉप में? अच्छा बहुत अच्छा। तरह की लाइटिंग है, 2 तो फ्रंट पे ऐसी रहती हैं। अब हम थर्ड लाइट बैकग्राउंड क्रिएट। ऐसे मूवमेंट्स हैं, रिबन कट रहा है तो वो सारा एक्शन है। मान लो कि मैं My name is Sameer and we are here on a pilot project of Sony Days, which we are doing in collaboration with DCOP. So this is for the first time we are doing a complete event at the college where we will be talking about Sony cameras, lenses and accessories. This is also one of the ecosystem which we are supporting students with, where they could use their cameras at the service center. They could submit it and we will upgrade their softwares and also clean the sensors and make sure that the lenses are also cleaned up, and this is all free of cost. The idea is to make sure that after sales support is easily available. And for these 2 days we will be doing the specialist workshops where we talk about Sony and everything related with Sony. Hi everyone, I am Sajindan from Chandigarh। तो आज हम पहुंचे हैं DCOP। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे सबसे पहले फैमिली जैसा हो, जो प्रतीक सर हैं, यहाँ हमारे मिश्रा जी हैं और यहाँ का जो स्टाफ है, सबसे पहले अल्टीमेट। तो काम दोस्तों सबसे बाद की बात होती है कि यहाँ का सबसे पहले स्टाफ कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और यहाँ के स्टूडेंट अल्टीमेट। जो पर्सन इन्हें सिखा रहा है वो फोटोग्राफी के साथ साथ किस तरह से बिहेव करना है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे बैठना है, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लगा DCOP में आके, और उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोगों को मिलता रहूँ। Thank you so much. So hello everyone, myself Ashdeep and I am a DCOP diploma student and 2 दिन का भी वर्कशॉप था सोनी की तरफ से and my experience so far was very good. कल फर्स्ट डे पे हमारा फैशन फोटोग्राफी का वर्कशॉप हुआ, ठीक है, एंड इट वाज वेरी गुड। तो बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली एंड आज हमें एक सिनेमाटोग्राफी के ऊपर वर्कशॉप हुआ एंड जो चीज़ें आती थी वो रिवाइज हुई, प्लस कुछ और नई चीज़ें, कुछ और नए एंगल्स, कुछ और नए मूवमेंट्स सीखने को मिले। एंड आज और भी कलर ग्रेडिंग के बारे में पता चला कि कलर थ्योरी एक सीन में कैसे वर्क करती है। एंड या दैट्स ऑल। एंड बाकी और जानने के लिए ज्वाइन करें DCOP।